हेलो। ये बहुत ऊंचा नहीं है?
बहुत ऊंचा नहीं। Can I not don't doubt my height. ये पढ़ने में नीचे ही ठीक है। I don't want to उसके नीचे कुछ निकला तो। आप करो ना, मेरे माई टू मच ऑन माई माइंड। वो उनको भेज दिया था मैंने चीज़। आई सेंट हिम ऑलरेडी उसी दिन, उसके बारे में बात भी कर ली थी। इसे थोड़ा रुकते हैं।
Namaskar. I am Anuja Agarwal from Sitare University. I welcome you all to this short, sweet, but very important inaugural session of our partnership of Sitare University Scholarship Program with SRMU. It's a great pleasure that all of you are here. The students, the dignitaries, the trustees, the very eminent entrepreneurs, are very important dignitaries of SRMU. Chancellor Sir is here and Pro-Chancellor is here, Vice Chancellor Sir is here and Director IoT is here. So I welcome you all. We are, of course, I must let me tell you why we are here. We are gathered here to mark the momentous occasion of the commencement of the first batch of Sitare University Scholarship Program students in collaboration with Shri Ramswaroop Memorial University in Lucknow. It absolutely gives me immense pleasure to welcome you all on this inaugural day and being a part of this occasion. The revolutionary step in the field of higher education in computer science is an added dimension to the legacy of Sitare Foundation, founded by Shilpa and Amit Singhal. Sitare Foundation, driven by the couple, has been working tirelessly since 2016 to make high-quality education accessible to students who would otherwise not have an access to it. The organization that currently spans 5 cities in India is dedicated to the mission of transforming 50,000 lives through education by 2050. So I think it's a remarkable mission. And thank you, Amit and Shilpa, for doing this. I know Shilpa is there in spirit with us. She's actually sitting there, yes, and she's attending this. Hi, everyone. Hi, Shilpa. Oh, great to hear your voice. And thanks for, great, we can see you. Thanks for being here. We just mentioned you. Of course, my pleasure. Yeah. So be around with us till the end. Yeah. On behalf of Sitare, I wish to take this opportunity to thank Shri Ramswaroop Memorial University in Lucknow for extending their help and support in making Sitare University Scholarship Program a success. SRMU, established in the year 1999 by again 2 young visionary entrepreneurs and gold medalists from IIT Kanpur. We are in Miss August company. They established SRMU in the year 1999, and since then they have been spreading technical management and other professional education among the masses. It has pioneered to other fields of education, as I see it. There are so many more. For example, agriculture and architecture. If I go to the entire list, I think I'll be spending another 5 minutes here. Currently, 10,000 students, I'm told, are already enrolled across various campuses of this university. So students, Sitare students, you are privileged, that you're a part of this, and you can enjoy the great infrastructure and education system and ecosystem that Pankaj ji and Pooja ji has already built for you. So now, formally, I would like to welcome Shri Pankaj Agarwal ji, Chancellor SRMU, Srimati Pooja Agarwal, Pro-Chancellor SRMU, Dr. Sharma, Dr. D.K. Sharma, Vice Chancellor SRMU, Dr. Neeraj Gupta, who's the Director IoT SRMU, for gracing this occasion. I cannot thank enough Mr. Nimish Saxena and Ms. Twinkle Jain. Twinkle, I want you to please come. It's so important for us to acknowledge. I think Nimish and Twinkle have been great supporters. हम भी नहीं थे तब से वो उन बच्चों आप लोगों को आप लोग सब जानते होंगे, राइट? हम भी नहीं थे तब से मैम और सर आप लोगों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं. It brings tears to my eyes how somebody else can adopt somebody else's kids. So thank you so much. We are honored to have amidst us, of course, Dr. Amit Singhal and Shilpa Singhal today for this inauguration. Obviously, it couldn't have happened without you, so thank you so much. And I know you've traveled 36 hours, you must be groggy, but thanks for being here. I would like to welcome the trustees, Mr. Sumit Agarwal. Sir, thank you. I know you've traveled again from Bangalore, so thanks for being here. Mr. Anuj Agarwal, thanks for traveling from Mumbai all the way. Mr. Shalab, thanks, Shalab, for taking your time. Mr. Poshak is not here. He must be around somewhere. Mr. Poshak. Mr. Harsh. Harsh, thank you so much. And
you're so kind. You've been great help since a couple of days for us. We also have an eminent set of founders amongst us, Mr. Mohit Dubey. Yeah, you're a hero, sir. You have a big fan following, as I can see. Thank you so much, and it was a wonderful speech from you. Mr. Abhinav, thank you. Yes, Abhinav, great, thank you. I think your Beans AI is doing a great job, and बहुत सारी inspiration है हम लोगों के लिए. Mr. Vishal Gondal, I will just take their names because they were very much there, and Mr. P.K. Gulati who joined us. Ms. Neha Singh, of course, I cannot forget her because she inaugurated the inaugural day, so to speak, so thank you so much. Mr. Ravi Ranjan Pandey ji, आपका बहुत-बहुत स्वागत. Thanks for grooming the Dakshina kids the way they are, and I'm sure that the discipline that you have imbibed in them, they will carry it forward. And of course, the entire Sitare team, I welcome you to this, and of course, our other guests today. May I now request our dignitaries to please light the lamp to mark the inauguration of the university. Thank you so much. We'll proceed with the signing of the MOU. May I invite Dr. Amit, Shri Pankaj ji, Pooja ma'am, please come on stage, and Mr. Sumit Agarwal, please come. We'll go ahead with signing of the MOU to mark the inauguration, please. Aye, please. And while you are there, I think we have some people waiting for the Saraswati Vanna. Please come over. Yeah. While you are settling, we'll have Saraswati. या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे मन से हमारे मिटा दे अंधेरे हमको जालों का संसार दे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ. So with that, we also have the wishes of Goddess Saraswati with us. May I now request
I think I'll now request Pankaj ji to please come and encourage our students. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. All the dignitaries, Shri Amit ji, Anuja ji, everybody, all the trustees, founders, and such a great set of people who have come across from all over the globe. Mr. Dubey, I saw his fan following, so amazing. And of course, Ramswaroop Parivar, we always call it as a family. So when you were mentioning that Nimish and Twinkle, they took care of you. So this is how we behave, that's a basic trait. इसी तरह से हमने इस परिवार को बड़ा किया है. So आप सबका सबसे पहले लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत, और ईश्वर से जैसे हम लोगों ने यहाँ प्रार्थना की, and I'm sure we'll do a wonderful job here. और आप सब लोग बहुत खुशनसीब हैं, सभी ये स्टूडेंट्स जिनको सितारे फाउंडेशन द्वारा पिक किया गया, चूज़ किया गया. Treating this as a privilege, I would say, would be wrong. मुझे लगता है कि आप सभी लोग आज यहाँ जो बैठे हुए हैं, उन सब का कारण ये है कि एक माध्यम बनता है, और सितारे फाउंडेशन मुझे लगता है यही माध्यम है कि आप सब के अंदर वो स्पार्क, वो जो एक ज्योति होती है, जो एक विगर है, मुझे लगता है वो आप लोगों में दिखाई दी. एंड आई कैन गारंटी यू आर जस्ट इन द राइट हैंड्स. सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ऑफ व्हाट वी डिड. सो जैसा कि अमित जी बता रहे थे, उन्होंने भी 22 बच्चों से ही शुरुआत की थी, तो हमारी भी कुछ स्टोरी ऐसे ही है. सो वी स्टार्टेड एट अ रेंटेड प्लेस, एक किराए की जगह लेके. IIT कानपुर से पढ़ने के बाद दो लोग, सबके नए नए सपने होते हैं एट दैट एज, बट वी गॉट इनटू बिकॉज मुझे अपने परिवार की तरफ से हमेशा ये बताया गया कि जो शिक्षा होती है, इट्स अ किंग्स जॉब. जब शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था, तो उसकी जो सम्राट वाली उसकी जो ईगो थी, वो सेटिस्फाई करने के लिए उसको एक काम चूज़ करने के लिए कहा गया था. तो उसको किसी ने बताया कि आप ऐसा करो, बच्चों को पढ़ाने का काम कर लो. सो व्हाट इट मीन्स इज़ कि शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना, इट इज़ अ किंग्स जॉब, एम्परर्स जॉब. सो आई एम वेरी लकी दैट ईश्वर ने मुझे ये इस क्षेत्र में जो है डाला. बिकॉज आई अगेन फील हम सब लोग किसी ना किसी चीज़ से बंधे हुए हैं. अगेन जस्ट टॉकिंग टू अमित जी, एंड मुझे लगता है क्यों हम लोग साथ में आए, शायद बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की आपस में मेल खाती हैं. द फर्स्ट बुक दैट वी टॉक अबाउट, और मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, हमारे केस में पूजा पढ़ने वाली हैं तो मैं कम पढ़ता हूँ, और एक किताब जो मैंने शायद पढ़ी हुई है, दैट वाज पाउलो काइलो, एंड दैट वाज इट, एंड आई हैव बीन प्रोनाउंसिंग इट एज पॉल सेलो. सो अल्केमिस्ट वाज द बुक व्हिच ही टॉक्स अबाउट, जो आप लोग पढ़ेंगे. सो ये हमेशा यही बताती है कि जो कुछ भी, जो पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी जो एनर्जीज हैं, ये इसी ब्रह्मांड में, इसी जगह घूमती फिरती रहती हैं और हमको आके लगती हैं. सो मैं केवल यही कहूँगा जो मैं अपने सब बच्चों से कहता हूँ, इन साल, 2 साल, 4 साल, जो भी आपके कोर्स का समय है, इसको यादगार बनाइए. स्पेंड टाइम इन मेकिंग फ्रेंड्स. जितना सीख सकते हो, जितनी चीज़ें कर सकते हो, जितना ज़्यादा अपने आप को को करिकुलर्स में डाल सकते हो, इट्स बहुत बड़ा समंदर है. जस्ट इंडल्ज योर सेल्फ. हॉबीज़ हैं, जो सपने आप नहीं कभी कर पाए, गाना नहीं सीख पाए, डांस नहीं कर पाए, प्लीज़ डू इट. गेट इन टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स. पढ़ाई तो हम करा ही लेंगे, एंड आई एम श्योर द काइंड ऑफ प्लान्स दैट सितारे हैज़ फॉर यू इज़ ट्रिमेंडस, अमेजिंग. सो यू आर गोइंग टू बी देयर, जो जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई एम श्योर समवेयर यू आर गोइंग टू बी देयर. एंड आई मीन अगेन यू शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी की इस तरह के लोगों ने आपकी जिम्मेदारी ली है. बट मेक दीज ईयर्स फ्रूटफुल. और एक और आखिरी बात जिसको कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, अच्छे इंसान ज़रूर बनिए. हम सबको, इस समाज को जहाँ हम रहते हैं, उसको एक अच्छी जगह बनाना, क्योंकि ये चीज़ लौट फिर के फिर मेरे पास आनी है. और मुझे लगता है शायद यही कारण था कि एक अमेजिंग करियर के बाद भी अमित जी और शिल्पा जी ने जो है इसको अपने मिशन की तरह चुना. इसमें कोई और कारण है. फिलैंथ्रोपी कहना बहुत आसान होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इस तरह का मिशन अपने हाथ में लेना, it requires a lot of effort. It requires a lot of willpower. And thanks to you, Amit ji, and it is amazing that you have taken up this mission. And मैं आपको रामस्वरूप परिवार की तरफ से इस बात के लिए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने सोचा है, we will exceed your expectations. और जो कुछ भी बन पड़ेगा, हम जैसे अपने और बच्चों के लिए, हम सभी बच्चों को जो है बेहतर से बेहतर एक एम्बियंस प्रोवाइड करेंगे, और इनको अच्छा इंसान बनाने में कोशिश करेंगे, जो इस दुनिया को जो है एक अच्छी जगह और बनाए. बहुत बहुत धन्यवाद. कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन. जय हिंद, जय भारत.
Thank you so much, Pankaj ji, for the encouraging words. May I now request Dr. Amit to come? Thank you, everyone. Thank you, Pankaj. Thank you, Pooja. Thank you, SRMU, for giving us this opportunity to work with you. You know, as they say, that the universe conspires to make you successful. That's what you will read in that book that you just got. जब आप अपनी मार्ग चुन लेते हो तो सारा ब्रह्मांड तुमको सक्सेसफुल करने में लग जाता है। और ये मैं पिछले महीनों में, एज वी आर पुटिंग दिस टुगेदर, एज वी आर पुटिंग द यूनिवर्सिटी टुगेदर, ये मैं पिछले महीनों से हर महीने ये मैं एक्सपीरियंस करता हूं। शुरू हुआ, मैंने एक विजन पेपर लिखा कि हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट की जरूरत है हिंदुस्तान में। एक पेपर लिखा, उसके बाद मैंने अपने 15-20 दोस्तों को ईमेल किया। मैंने कहा ये मेरा थॉट है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और उन्होंने कहा दिस इज अ ग्रेट थॉट, वी आर विद यू। सम ऑफ देम आर सिटिंग हियर and everyone is here with you in spirit. That was the first step. Then I called my good friend Manish Pabrai, the founder of Dakshina Foundation, who then connected me to two people in this Brahmand, Commander Arun Mishra and Mr. Ravi Ranjan Pandey. उन्होंने कहा आप इनके पास जाओ and they will tell you how to actually build this. And those people, and then the universe started conspiring to make this university a reality. And then another few months passed, and the universe sent me Dr. Anuja Agarwal, who has been then tirelessly working to make this university, this program, what it is for you. And you see all the people that are sitting here, the universe just sent me those. All I did was write a 2-pager that we need more computer scientists and let's go do it. I didn't know how. I will tell you honestly. मुझे नहीं पता था मैं करूँगा कैसे ये। तो पहले तो मेरे सबसे बड़ी सपोर्ट वो बैठी हुई है स्क्रीन पे वहाँ पे। You know, we've been married 30 years and she says, yeah, it's crazy, but let's go do it. You know, it's crazy, but I know this needs to be done. And well, guess what? What's the worst thing that would happen? We'll fail. If we don't try, we have already failed. So let's go try. देखते हैं क्या होता है, बाकी तो देखेंगे जैसे जैसे जब जब चीज बनानी होगी. And then the universe conspired to bring me the people that I talked about and many that I didn't talk about here right now. And that's how we are building this. Then the universe conspired, and one of the people that I had sent that original 2-pager, एक मैंने वो जो 2 पेज लिखे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अमित प्रकाश, वो थॉटस्पॉट का फाउंडर है. मैंने उसको भी भेज दिया. मैंने कहा अमित तू क्या सोचता है? भाई यार इसके बारे में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं यार बच्चों को, क्या है? कहता हाँ मेरा एक दोस्त है उसकी पूरी यूनिवर्सिटी है, उससे बात कर लेना. मैंने कहा क्या कोई पूरी यूनिवर्सिटी है? हाँ पूरी यूनिवर्सिटी है, उससे बात कर लेना. उसने लखनऊ में यूनिवर्सिटी खोली, बहुत दिनों से यार उससे बात नहीं हुई, मैं भी मैसेज डालता हूँ. तो अमित प्रकाश ने फ़ोन निकाला, इसको मैसेज डाल दिया. ये मेरे से, मैं 2 हफ्ते बाद दिल्ली आया, मेरे से दिल्ली मिलने आ गया पंकज. See, this is how universe is conspiring. Once you set a path, I am going there. The universe, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारे लिए पूरी सड़क बिछाएगा और तुमको आगे लेके जाएगा. पर वो पहला स्टेप जो है वो तुमको खुद लेना है कि मुझे वहां जाना है. उसके बाद तुम्हारे पास मोहित दुबे आएंगे, शलभ जी आएंगे, सारे ट्रस्टीज आएंगे, अभिनव आएंगे, 500 कंपनियां और हैं जो अभी आएंगी, और तुमको वहां क्या जितना तुम जाना चाहते हो उससे आगे पहुंचाएंगे. तो ये याद रखना. मैं बस इतना ही कहूंगा, ये शुरुआत है. हर जर्नी में
अच्छे दिन आते हैं और मुश्किल टाइम आते हैं जब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और लगता है कि कल नहीं आएगा, ये रात ख़त्म नहीं होगी। मैंने भी देखा है, बहुत देखा है, सब ने देखा है। जिसकी उम्र आती जाती है उसने वो दिन भी देखे हैं जबकि बहुत रोशनी होती है, और वो रात भी देखी जो लगता है अब ये रात ख़त्म नहीं होगी। पर याद रखना, हर रात ख़त्म होती है अगर आप लगे रहोगे कि मैं जीत के रहूँगा या जीत के रहूँगी, मुझे निकलना है और कुछ बनाना है, अपने आप का, अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का, इस विश्व का इतना बड़ा आदमी बन के दिखाना है कि सारी दुनिया ये कहेगी कि हमने ये बना के दिखाया है। तो बस तुम लोग उस पाथ पे चलते रहो, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम जहां तक पहुंचे हैं। बस मैं ये चाहता हूं आज के दिन कि मेरी शक्ति जो है, द पावर बिहाइंड मी, प्लीज टेक 60 seconds शिल्पा टू जस्ट से समथिंग एंड देन आई विल वेलकम विशाल भाई। शिल्पा, Shilpa, you need to unmute, please. Yeah, sorry. Hi, everyone. I would just like to thank everybody who helped us get here today, and I would like to congratulate all Sitare University students. Students, you did it. You beat all the odds, and you made it here. We are very proud of you. और आज आप सब बच्चे अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए हो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आज से आप अपने सारे डिसीजंस के जिम्मेदार आप खुद होगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आप अपनी सफलता के हकदार भी खुद ही होगे। सो मेक गुड डिसीजंस, वर्क हार्ड एंड मेक एवरीबडी प्राउड अराउंड यू। वेलकम क्लास ऑफ 2026। और अब मैं आप लोगों को उस शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिसने दुनिया में इतनी ऊंचाई हासिल करी कि मेरी 10 उंगलियां खत्म नहीं होंगी अगर मैं गिनना शुरू करूं कि उतनी ऊंचाई इस दुनिया में कितने लोगों ने हासिल करी। लेकिन उस शख्स के बारे में मैं कितना भी कहूं वो कम है। वो उन्होंने स्टैनफोर्ड से पीएचडी करी एआई के फादर के साथ, और करियर में इतना आगे बढ़े कि एसएपी जैसी कंपनी के सीटीओ बने, उसके बाद इन्फोसिस जैसी कंपनी के सीईओ बने। लेकिन उन्होंने एक दिन उठ के कहा कि मैं सीटीओ भी बन गया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का सीईओ भी बन गया, लेकिन मुझे अपना कुछ बनाना है, मुझे स्टार्टअप करनी है। और सब कुछ छोड़ के उन्होंने कहा मुझे दुनिया के लिए स्टार्टअप बनानी है। सो इट गिव्स मी इनफाइनाइट प्लेजर दैट द पर्सन who has showered me with his love, warmth, blessings, friendship, and strength is here with us to deliver the inaugural lecture of Sitare University at SRMU. Please give a loud round of applause to Dr. Vishal Sikka. Thank you so much, Amit Bhai. It is such a pleasure to hear you. Hi, Shilpa. How are you? Hi, Vishal. I'm good, thank you. Thank you so much. Amit Bhai, should I speak in English or Hindi or both? Both? ठीक है. From my side as well, I am sitting here in Boston in a hotel room. I just got here last night. By the way, आप लोग कहाँ पे हो? लखनऊ में हो क्या? Yes. अच्छा, okay, cool. So I will say a few words to start with, and then मेरी उम्मीद है कि आप लोग थोड़े सवाल पूछोगे मेरे को. I was thinking about at the beginning of the university, at the beginning of your class of 2026,
कि मैं शुरुआत के इस लेक्चर में मैं क्या बताऊं आपको. And I thought about it. Clearly आप लोग एक नई दुनिया की बुनियाद के ऊपर हो. एक you are at the beginning of a very important time in the world. You will learn about all kinds of things that are relevant for the future. You will learn about computer science, various aspects of practical aspects of computer science, programming. You will learn about quantum computing. You will learn about AI and machine learning. You will learn about cybersecurity, how to make systems, how to build large-scale systems like Amit Bhai has built. तो वो सब चीजें सीखेंगे. But there was one thing that Shilpa said that is very important, which is that आप लोग अपनी decisions के खुद जिम्मेदार हो और success के भी हकदार हो. So more than anything else, more than any other subject, what you are here to learn is learning itself, so that you can learn for the rest of your life. ऐसा नहीं है कि लर्निंग जब आप यूनिवर्सिटी से हटेंगे तब रुक जाएगी, या जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो स्टूडेंट होना बंद हो जाएंगे. लर्निंग जो की है, जो शिक्षा जो होती है हमारी, वो सारी जिंदगी चलती है. और अभी जो आप सीखेंगे एक डेडिकेटेड फोकस्ड वे से, दैट इज हाउ टू लर्न, so that you may learn anything that you need in the rest of your life. You will, when you are my age or Amit Bhai's age, you will not remember what you learned. You will not remember the syntax of the languages or the particular equations or the names of the inventors. You will forget these things. It is normal. It is natural. But what you will not forget is the process of learning, is how you learned. तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये जो अमित ने जो मुझे लेक्चर देने को कहा आपको, इसमें मैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करने के बजाय मैं आपसे लर्निंग के बारे में बात करूंगा. In particular, the what, the how, and most importantly, the why of learning. So those are the three things I want to talk to you about. Or rather, you can say one thing that I want to talk to you about, but three aspects of it. The one thing is learning. The three aspects of it are the what you are going to learn, how you are going to learn it, and why you are learning it. The what we already talked about. You will learn about digital technologies. That is what Sitare University is here for. Computing, AI, machine learning, quantum computing, security, these kinds of things, building distributed systems. So that is the what. But I also told you that the what is actually learning itself. How you learn is going to be the most important thing. अभी जैसे हम बैठे हैं, आप लोग एक रूम में हो, मैं जूम पे हूँ, शिल्पा जूम पे है, कई लोग और जूम पे हैं. You're only seeing me through a small screen, which is fine. It is a miracle of technology that I can come from home here to Boston, do this talk from here, and connect with all of you and share with you things. It is amazing. अगर 100-150 साल पहले इवन हमारे पेरेंट्स की बचपन में, जब हमारे मेरे पेरेंट्स, जो आप लोगों से 2 जनरेशन दूर, जो कि अगर ये देख रहे होते तो उनको मिराकुलस लगता है कि ये क्या है. लेकिन the reality is that this is not how we learn. The way we really learn is by immersing ourselves. जब हमारे पूरी इंद्रियों के साथ, हमारी पूरी सेंसेस के साथ जब हम किसी चीज के अंदर घुस जाते हैं, तब हम चीजें लर्न करते हैं for long periods of time. So that is why पुराने टाइम से नालंदा, तक्षशिला, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती थी, वो वहां जाते क्यों हैं लोग?
ये क्यों नहीं होता कि घर पे बैठ के टीचर आके पढ़ा दें? जाते इसलिए हैं कि यू आर इनसाइड एन एनवायरनमेंट, यू आर इनसाइड ए कॉन्टेक्स्ट, यू आर इमर्स्ड इन ए कॉन्टेक्स्ट where you learn, and that context is what gives you that ability to learn, and that happens by doing, learning by doing, by immersing, by iterating. Iterating का मेरा मतलब है कि बार बार चीजों को करना, जल्दी जल्दी चीजों को करना, बार बार करना, कई बार करना. हम लोग जब भी कुछ चीज करने की कोशिश करते हैं, the more times we do it, the better we learn. The more that we iterate with certain things, और अगली बार जब हम कोई नई चीज करेंगे, फिर उसके बाद और नई तरीके से करेंगे, और नई तरीके से करेंगे. मैं जब अभी स्टैनफोर्ड में आया था, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, तो एक प्रोफेसर था बॉब फ्लॉयड. आपने शायद नाम सुना होगा फ्लॉयड्स एल्गोरिथम का. Floyd's algorithm is still one of the most important algorithms in the world for traversing networks, for traversing graphs. तो मैंने उससे एक बार बात की थी कि मैंने उसकी क्लास ली थी, कि मैंने उसको पूछा था कि तूने Floyd's algorithm कैसे बनाया था. And he said that it took him the Floyd's algorithm that was actually published, जो कि हम लोग जिसको जानते हैं Floyd's algorithm के तौर पे, वो 7वीं अटेम्प्ट थी. It was the 7th time that he had written that same algorithm for the same problem again and again and again. He won the Turing Award, of course. He was the winner of the National Medal of Science and highest honors of computer science. बहुत humble, अमेजिंग इंसान थे वो. नहीं रहे अब, काफी टाइम, उनके कई साल हो गए हैं उनको गए हुए. पर उनसे ये मैंने सीखा कि इटरेट करना, बार बार चीजों को रिपीट करना, जब तक कि आपको लगे कि मैं अब इस चीज को और इम्प्रूव यहां से नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. दैट इज व्हाट लर्निंग इज, एंड यू हैव टू डू इट बाय डूइंग, बाय बिकमिंग इमर्स्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट अराउंड अस that makes it possible for us to do this. And the thing about doing and about iterating and immersing is that you cannot just do this in a vacuum. You cannot just do this on a piece of paper. You have to do this in real life. So एक जो प्रिंसिपल है जो कि अमित को बहुत प्यारा है इस यूनिवर्सिटी के लिए, वो यह है कि असली चीजों पे यहाँ पे काम करेंगे हम. किताबें बहुत है, कई किताबें 100 साल पुरानी होती हैं. Of course, there are lessons in those books that are still relevant. लेकिन real world happens not in these books. Real world happens on real problems. And that is why having a group of people involved in the university who can help identify real problems and important problems is so critical. In a fashion that hurts you, right? I'm sorry. यहाँ पे मेरे सिर के ऊपर एक टीवी है जो कि अपने आप बार बार चालू हो जाता है कुछ every few minutes. आप लोग उसको देख नहीं सकते. But you can probably see in the reflections on my face that there is something going on. That is why the most effective way to learn that we have is through this kind of immersion, through this kind of apprenticeship. जिसको apprenticeship लोग कहते हैं, कि जब किसी गुरु के साथ बैठ के आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो. So that is the second point that I want to make. The first point was about learning. The second point was about doing. कई बार हम लोग जाते हैं, हम इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम लोगों को जनरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ जाता है because of the various experiences that we get. But one other thing that it is very, very important for us to learn about is how to work together with other people, collaboratively. जिंदगी में आप जब भी जहां पे भी जाओगे और लोगों के साथ काम करना पड़ेगा.
Of course, individual excellence की जरूरत होती है. We have to be successful in what we do. We have to stand out. We have to do the best that we are able to do. We have to live up to our potential, get to the maximum potential that we can. But you also have to learn to collaborate. And that is one thing that you will learn here. You have to learn to work with other people. The beauty of working with other people is that, first of all, वो चीज जीरो सम नहीं होती. वो ये नहीं होती कि मैं तब लर्न करूंगा या करूंगी जबकि दूसरे इंसान के एक्सपेंस पे. What happens when you work together is actually the sum of the team that work together is greater than every one of you individually put together. It is actually multiplicative. The number of people working together in a group multiplies in its effectiveness if the group is working together effectively. तो ये चीज आपको सीखनी है यहाँ पे कि कैसे कोलैबोरेट करना है. दुनिया के जो जिंदगी के जो सारे इंपॉर्टेंट एंडेवर्स हैं, जो सारी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, वो सब कोलैबोरेटिव. द साइंस फॉर एग्जांपल इटसेल्फ, आइजैक न्यूटन कहता था कि इफ आई हैव सीन फर्दर it is by standing on the shoulders of giants. Because in science, you build on the work of others. In life, you build on the work of others. You improve on the work of others. पर वो करने के लिए जरूरी है कि दूसरे लोगों को पता हो कि आप कर क्या रहे हो. Which is about communication. और उसके लिए ये भी जरूरी है कि दूसरे लोगों को पता हो कि आप अपनी बात को दूसरे लोगों को बताओ. तब जाके उनको पता लगेगा कि आप कर क्या रहे हो. Similarly, you learn about what other people have done by reading about it. That is why there is a scientific tradition. But even beyond science, जैसे agriculture होता है, it is this idea of collaborating, waiting for the results, and working together. So these are a couple of things about how we learn by immersion, by being involved in great spaces, by doing, by rapidly iterating and improving on the previous time, by working collaboratively with other people. These are things that there aren't classes about. इसके बारे में कोई specific class नहीं होगी. लेकिन जो surface के नीचे अगर आप देखेंगे, तो these are the things that you are really learning about. But that brings me to the most important aspect of what I wanted to say to you, which is why are we learning? Why do we learn? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? Everything that you see around you, everything that was ever invented, was invented because someone saw something that was not there and decided to build it. जो भी नई चीज आप देखो अपने आजू बाजू जिंदगी में, घर पे, बाहर, कहीं पे भी, जो भी नई चीज है, जो भी इनोवेशन है, जो भी नई चीज कोई इन्वेंट हुई है, it is something that started by somebody seeing something in their mind that was not there. आईफोन नहीं था पहले, किसी ने बनाया. कोई भी चीज अगर आप देखो, पीछे जो मेरे जो लाइट बल्ब है, ये नहीं था, किसी ने इमेजिन किया कि यार लाइट बल्ब होना चाहिए. Why we learn is so that we may see what is not there. And this is the most unusual aspect of learning and of innovation. हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो senses हैं, these are programmed, we are programmed by nature to see what is there. Of course, we are programmed to see what is there in front of us. हमको दिखता है चीजें. And of course, eyes are the biggest part of our perception. But it turns out that we move forward, the world moves forward when we see what is not there. And science and education are fundamental ways for us to see what is not there, to see the unseen. AI, आप लोग AI का एक
फील्ड पढ़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरी पीएचडी उसमें थी। तो एआई का जो फाउंडर था, ही वाज अ प्रोफेसर बाय द नेम ऑफ जॉन मैकार्थी। वो स्टैनफोर्ड में पढ़ाता था और ही वाज द हेड ऑफ माय क्वालिफाइंग एग्जाम कमेटी। तो एक बार शुरू में जब मैं स्टैनफोर्ड में था, तो उनकी एक क्लास थी और उस क्लास में उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज हाफ द एफर्ट, आर्टिकुलेटिंग ए प्रॉब्लम इज द अदर हाफ। तो मैं तब तक सोचता था कि द होल एक्सरसाइज, I'm sorry about this TV situation. Let me see if I can fix it. That should be better, at least for a few minutes. So he said, articulating a problem is half the solution. अब हम लोग जब AI की शुरुआत में बात करते थे, तो idea was कि problem solving जो होती है, वो automate हो जाए. If you can describe a problem, proteins को fold करना है, पिक्चर्स में से कोई चीज ढूंढनी है, एक ट्रांजैक्शन के अंदर फ्रॉड है या नहीं ये ढूंढना है, ये मशीन कब फेल होने वाली है ये प्रेडिक्ट करना है, whatever. You have some problem that you want to solve, AI will help you solve this problem. But what he was talking about was not problem solving. He said, articulating a problem is half the solution. So this was a bit shocking to me. कि भाई problem solving से पहले भी कोई चीज होती है. And that is problem finding. That is seeing something that is not there. That is looking at the world around you and identifying इसमें क्या चीज missing है. What is it that is missing that if it was there, it would improve things? कि दुनिया में आईफोन नहीं है, एक ऐसा फोन जिसके अंदर टच स्क्रीन हो, जिसके अंदर इंटरनेट कम्युनिकेशन बिल्ट इन हो, वगैरह वगैरह, कि ये चीज एक अच्छी चीज है. Of course, when you do something like this, a lot of times you will find things that don't work. But you have learned to see something that is not there and to build things that are not there. लोग मेरे को पूछते हैं, आज अभी मैं जा रहा हूं जहां पे तैयार होके आई एम गोइंग टू अ बोर्ड मीटिंग, इसके बाद उसमें मेरे को लोग पूछेंगे, हर कोई मेरे को ऐसी इस तरीके की मीटिंग में ये सवाल पूछता है कि एआई आ जाएगी, हमारी नौकरियों का क्या होएगा, जॉब्स का क्या होएगा, हम लोग क्या करेंगे. My answer is always very simple. First of all, we are not close to AI. No way. We are decades से भी ज्यादा दूर है असली एआई जिसको बोलते हैं. अभी जो एआई है वो एक्चुअली एक टूल है, जैसे हमारे ये टूल्स हैं, जूम एक टूल है, कंप्यूटर हमारे टूल्स हैं, इस तरीके का एक टूल है. एंड यू विल लर्न टू यूज दीज टूल्स, नो प्रॉब्लम. But even if there is an AI which has just abilities just like us or even better than us, the frontier that we will have will be problem finding. It will be seeing things that are not there, that if they were there, they would make things better, they would improve things, they would move us forward. This, to me, is the purpose of education. This, to me, is the purpose of education at Sitare University. Not so that we can do what other people are doing, so that we can learn to become the 1 millionth Python programmer. Nothing wrong with learning Python programming. मैं वो ये नहीं कह रहा. But that is not the point. That is not the reason. The reason is so that we may see something that is not there, and so that we may build it, and so that we may move all of us forward. That, to me, is why we are all here. We are all here, myself, Amit, Shilpa, everybody who is here, is also here to help make that happen, to help you make that happen. मैं भी आया था इंडिया अप्रैल में, मैं दिल्ली गया था, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिला था, प्राइम मिनिस्टर को मिला था, और मैं यही बात कर रहा था उनको कि पिछले 75 साल में
हमने बहुत प्रोग्रेस की है, काफी आगे बढ़े हैं, दुनिया में एक फोर्स बन गए, लेकिन हमने फॉलोइंग बहुत की है दूसरे लोगों की. It is time to do things of our own. It is time to invent things on our own, to innovate on our own. और वो करने के लिए स्टीव जॉब्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोला करता था. वो ये कहता था कि the important thing in life is to remember that everything around you was built by people who are no superior to you. And therefore you can do the same thing. You can do the same thing through the power of education, by learning not only the things that you are there to learn, but by learning to learn by doing, by collaborating, by iterating, and learning to see things that are not there, and then to apply these practices to build those things, to build the future of our world. This is what I wanted to say to you. So, thank you very much, and I hope that कुछ लोग आप लोग मेरे को कुछ सवाल पूछोगे. Amit bhai, you are on mute. Thank you so much, Vishal bhai. What an inspirational start to this journey at Sitare University, guys. Can we give one more round of applause? Thank you so much. Thank you so much. हम लोग कितने I hope, lucky हैं. Amit, I hope that the students have some questions. Of course, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, तैयार कर लो. हमारे यहाँ एक जोक होता था कि जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था तो हम उससे कहते थे, भाई देखो जो पहला क्वेश्चन पूछेगा उसे 20 रुपए दिए जाएंगे. तो उसमें एक तुरंत लौंडा खड़ा हुआ, कहता सर 20 का नोट दोगे या 10-10 का? That's my question. तो देखो हम लोग, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास आज विशाल भाई आप सबको मेंटर करने आएंगे. अगले ट्रिप पे जब ये इंडिया आएंगे, यहाँ आएंगे, आप सबको दिखाएंगे कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है जब आप अपना दिल लगाओगे. तो आज मौका है, आप विशाल सर से जो एक बर्निंग क्वेश्चन है जीवन के बारे में, किसी भी बारे में, सुख के बारे में, दुख के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं पूछना, दुनिया के बारे में जो पूछना है पूछो. अच्छा, माइक कौन ले जा रहा है पीछे? Vishal, does yeah, guys, can we take the mic back there? Here, there's one here. Yeah, sorry, यहाँ पे भी विशाल भाई, यहाँ पे भी 2 विशाल हैं सितारे की टीम पे, so they are running the mic. You guys, phones off, phones off. Yeah, no problem. All right, yeah. Yeah, we have a daughter back there who had a question, so why don't we let her go first? Yeah, yeah. Rane beta, ये इसको. Yeah. हाँ बेटा. Thank you sir. My name is Aline Verma. Sir, I have a question. Sir, जैसा कि हम सुन रहे हैं, we are listening that software is scaling down. So software companies are scaling down as our field, data science, AI and Python. All these things are scaling down by the end of 2030. ऐसा ही अजम्पशन बनाया कि बाय द एंड ऑफ 2030 जो सॉफ्टवेयर का एक प्रोडक्शन है, जो कंपनीज है, जो प्रोजेक्ट होता है सर, वो डाउन हो जाए, स्केल अप डाउन हो जाए. सर क्या ये बात सर सही है? मतलब स्केल डाउन हो रहा है सर? जैसा होता है कि बताया जा रहा है कि बहुत से लोग कंपनी को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब जो कंपनी है यूट्यूब के थ्रू, बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू वो चीज़ सीख ले रहे हैं. तो अभी वो ज़रूरत नहीं पड़ रही है कंपनी को नए सॉफ्टवेयर डेवलपर या और भी फील्ड डेवलपर्स फील्ड की जरूरत नहीं पड़ी. सर ये बात सर सही है? Absolutely not. Absolutely not. सर बट मून लाइटिंग हो रहा है. एक आए तौर पे आए दिन some days there are demand is up and down, वैसी चीजें होती रहती हैं.
लेकिन इन जनरल ये चीज किस तरफ जा रही है उसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की सारी फंक्शन, सारे प्रोसेसेस, सारी एक्टिविटीज डिजिटल बनती जा रही हैं। और द अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड इज नॉट ओनली इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली। अगर आप देखो जितनी लाइंस ऑफ कोड दुनिया में ऐड होती जा रही हैं हर रोज, वो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। और वो उस the amount of code that is sitting in GitHub, it is increasing exponentially. So ये absolutely बात सही नहीं है कि सॉफ्टवेयर का अमाउंट दुनिया में कम होएगा या 2030 पे रुक जाएगा। 2030 पे जितना सॉफ्टवेयर होएगा वो अब के सॉफ्टवेयर से कई गुना ज्यादा होएगा, और फिर 2040 में उससे और कई गुना ज्यादा होएगा। So there is a inevitable and a massive shift in the world towards digital. निकोलस नेग्रोपोंटे था इसी शहर में, बॉस्टन में, जिसने MIT की मीडिया लैब शुरू की थी। He used to say कि this shift to digital is irrevocable. It cannot be turned back, and it is also exponential. It is increasing exponentially. So learning software skills का कोई substitute नहीं है। Sir, one more query is that a fact is there, the increasing automation is decreasing the manpower. Sir, this line that increasing in the automation, decreasing the manpower, sir, this quotation also comes a question that as the youth is increasing, in India only population is growing, sir, in world also population is increasing day by day. So it's not reducing, it's increasing. So increasing automation will decrease the manpower, so the work amount in the software industry as well as the entrepreneur industry, sir, it would be reducing down. ये भी अली आपने दोनों बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं। ये भी एक ऐसा सवाल है जो कि सरफेस पे लगता है, हमको सरफेस पे लगता है कि ऑटोमेशन हो जाएगी तो लोगों की जॉब कहाँ चली जाएगी। अगर आप देखो इन द पास्ट, जैसे ट्रेन्स होती थी या एग्रीकल्चर था, ये चीजें बहुत ज्यादा मैनुअल होती थी। अब ये सब चीजें ऑटोमेटेड हैं। क्या इसके कारण चीजें कम हो गई हैं? There was a time about 100 years ago, जब यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर एग्जांपल more than 90% of the jobs were agricultural jobs. More than 90%. Now less than 3% of the jobs are agricultural jobs. But the amount of agriculture being produced is still massive. So automation में ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार जो जॉब है वो चली जाएगी, तो वो जो ऑफ कोर्स जो जॉब थी, कई उनमें से कई जॉब चली जाएंगी, सब नहीं बट कई जॉब चली जाएंगी। लेकिन आप ये देखो कि जो ऑटोमेशन है वो क्या है, वो ऑटोमेशन को कौन बना रहा है? वो ऊपर से थोड़ी गिर रही है ऑटोमेशन, हम ही लोग बना रहे हैं ऑटोमेशन, लोग बना रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं ऑटोमेशन को। जो रोबोट्स हैं, जो ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं, वो किसी ने लिखे हैं, वो हम ही लोगों ने लिखे हैं। वो सॉफ्टवेयर है, वो इंटेलिजेंस है, उसके अंदर डेटा है, एनालिटिक्स है, ये सारी जो चीजें हैं। What people don't realize is that the jobs that are displaced by automation, actually more jobs are created by the automation itself. तो अगर आप इस समय आप जॉब बोर्ड पे जाके देखोगे तो डेटा साइंस की जॉब्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स कंप्लीटली अनफिल्ड हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में करीब 2-2.5 मिलियन ऐसी जॉब्स हैं। हर कंपनी जिसको मैं जानता हूं is starving to get data scientists, is starving to get AI engineers, machine learning operations engineers, cyber security engineers. और अभी क्वांटम कंप्यूटिंग अभी शुरू नहीं हुई, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी अभी शुरू नहीं हुई, ये चीजें अभी शुरू होंगी। लोग कहते हैं कि ऑटोनोमस ड्राइव, मैं BMW के बोर्ड पे हूँ, ऑटोनोमस ड्राइविंग आ जाएगी तो हम ड्राइवर क्या करेंगे? वो ऑटोनोमस ड्राइविंग भी तो कोई बना रहा है ना। वो ऑटोनोमस ड्राइविंग का जो सॉफ्टवेयर है वो कोई लिख रहा है, उसको कोई मेंटेन कर रहा है, उसको कोई इंटीग्रेट कर रहा है, कोई इवॉल्व कर रहा है। सो फोकस ऑन वेयर थिंग्स आर हेडेड, फोकस ऑन what is it that people are actually building for, and become one of those builders of the future. Don't focus on automation से कौन सी जॉब चली जाएंगी। ऑटोमेशन के कारण जॉब हमेशा रहेंगी।
Good morning, sir. I think there will be morning. My name is Anmesh Awasthi. I am a student of Sitare University. Sir, when you was CEO and MD of Infosys, so sir, मतलब सर आपने उस समय मतलब $10 billion की कंपनी सब मतलब प्रेशर कैसे सर हैंडल किया? बिलियन बोलना चाह रहे हो? यस सर, $10 billion. हाँ. Okay. तो सर उस समय आपने सर प्रेशर कैसे हैंडल किया किसी डिसीजन को लेने के लिए? अल्टीमेटली हमको जो रियलिटी दिखती है वो जितनी जैसे दिखती है वैसी दिखती है. छोटे डिसीजन बड़े डिसीजन एक ही जैसे होते हैं. Some you decide. I think Amit, the way I understood the question was कि ये इतनी बड़ी कंपनी बड़े डिसीजन कैसे लिए? Something like this, right? Yes, exactly. That was the question. Why did you not buckle under pressure? No, I was not. Of course, there is pressure. You realize कि 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, you know, हजारों customers हैं. Things that you say, things that you do will have large impact. You weigh that, you measure that, but you have to keep taking decisions. And ultimately, the reality that you have to see is that the human brain is what it is. It processes certain amount of information, and one thing that I will say about important decisions is that you have to transcend the limitations of yourself. You have to किसी तरीके से हमको अपनी जो हमारे जैसे ये नोटबुक है, पेंसिल है, इसका क्या रीजन है? हम लिख लेते हैं चीजें जो याद नहीं रहे ताकि हमको आगे याद आए. Why do we do that? We do that because our brain itself, even though we have billions of facts that we remember in our brain, at any moment in time, there is a psychologist ने study की थी 1970s से कि it is 5 plus or minus 2 things. Generally हमारे दिमाग में on average 5 चीजें रहती हैं. इसीलिए फोन नंबर्स जो होते हैं वो 7 डिजिट के रखते हैं नॉर्मली. अब इंडिया में 10 डिजिट के हो गए हैं और पहले 3 जो जनरली लोग भूल जाते हैं, 980 या ऐसे भी है, बट द नंबर इटसेल्फ इज यूजुअली 7 डिजिट्स बिकॉज आवर ब्रेन कैन हैंडल 7 थिंग्स and generally it can handle 5 plus or minus 2 things. So we invented these tools like this thing to help us get beyond the capability of our brain. To help us think beyond that. So in important decisions, it is very important to keep your feelings separated. Feelings तो होती हैं, emotions होती हैं, हम लोग जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी spiritual बात है ये कि you have to also learn to observe your own feelings. कि हाँ ये मेरे को pressure हो रहा है या मेरे को गुस्सा आ रहा है या मेरे को ये चीज emotional कर रही है. And learn to sidestep that, to bypass that. In important decisions where there is a big impact, it is even more important to become more rational, to become more quantitative, become more analytical and more measured in what you say. And tools, technology helps us do that. So that is one thing also to remember. Thank you, sir. All right. There's one more question. Okay, Anmol, you get the last question. Okay. Sir, welcome you once again on the behalf of Sitare family. So, as you said that learning to learn. So, sir, my question is that, sir, how will you see the whole world to pick up that ideas, and what is the criteria of your mindset that how you will learning to learn, how will you do to that? So. Bhai, I think the paraphrasing of the question is, how did you learn to learn? The hard way.
नहीं, ये जो मैंने कुछ आपको 2 एग्जांपल्स जो इन पर्टिकुलर बताए, बॉब फ्लॉयड वाला और जॉन मैकार्थी वाला, ये मेरे साथ ही अर्ली दिनों में ये चीज हुई थी कि it was a bit shocking to me that Floyd did that thing about learning, about iterating his algorithm multiple times, and that you have to keep trying multiple times to do certain things. That was one interesting thing. लेकिन तो वो सारी टैक्टिक्स सीख लेता है इंसान. सबसे जरूरी चीज होती है क्यूरियोसिटी. जैसे आपने जो सवाल मेरे को पूछा कि आपने कैसे किया ये, when you get stuck on something, there is a human tendency to give up. एक्चुअली मैं जब आया यहाँ पे, मैंने जब ये जूम पे मैंने लॉग इन किया, तब अमित, दिस इज व्हाट अमित वाज टॉकिंग अबाउट, टू नॉट गिव अप, टू वर्क हार्ड एंड टू नॉट गिव अप. क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा, उत्सुकता जो होती है हमारी, दैट इज अल्टीमेटली एन इंस्टिंक्ट टू नॉट गिव अप, टू से कि यार ये नहीं हो रही चीज, इसको मैं कैसे करूं, या ये दूसरा बंदा ये चीज कर रहा है, ये कैसे कर रहा है. वो जो स्पार्क है, वो जो एक लाइट है, एक क्वेश्चन है, वो कभी नहीं जाना चाहिए. until our last day. You have to learn that. You have to keep staying curious. मैं जब इन्फोसिस में था, लोग मुझे पूछते थे कि तू कह रहा है कि हर कोई इनोवेट कर सकता है. मैंने जो बड़ा प्रोग्राम बनाया था, जीरो डिस्टेंस, that was around getting everybody to be innovative, all 200,000 people. अब लोग कहते थे कि यार क्यों ऐसा कह रहा है, 25-30 इनोवेटर्स हैं, बाकी सब लोग इनोवेट थोड़ी करेंगे. And my view was, क्यों नहीं? Why can't everyone be an innovator? And I deeply believe that all of us can be innovators. आप अगर किसी 4 साल के बच्चे को देखो, have you ever seen a 4-year-old child who is not curious? Every one of us when we were children, we were curious. Somehow, because of circumstances in life, we end up in a situation where we lose that curiosity. We become bogged down. We become mired in the details of life. But that curiosity is actually there. लोगों को हम जब डिजाइन थिंकिंग कराते थे, even people in their 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, when they take a class in design thinking, for example, they suddenly realize, I can look around at a room and see, ये चीज खराब है, वहां ये चीज नहीं हो सकती है, ये चीज बन सकती है. So that curiosity is the basis for learning and for learning to learn. And that you can never abandon. Actually, I should have mentioned that in my remarks. Thank you, sir. Great. So, again, Vishal Bhai, from the bottom of my heart, thank you for starting this university with your presence, because no one in this world could have asked for a better start to Sitare University than having Vishal Sikka deliver the inaugural lecture at this university. Thank you so much, Bhai. Thank you from the bottom of our heart. Thank you. Thank you so much, Amit Bhai. Thank you, Shilpa. Thanks, everyone. I wish you all the very best of luck and incredible journey ahead. And I'm looking forward to joining you time to time and talking about, things that are on my mind and on your minds. Great. Thank you so much, Bhai. All right. Thank you. Bye-bye. Have a good day. Yeah, I think, we can turn on the lights. Yeah, with that, please, Pankaj, join me for 2 minutes. And collectively with Pankaj, at this point, I would like to say, Sitare University is officially open for business with SRMU. Thank you. And welcome to the new Sitare University. Just one correction I would make, it is not business. I think it's just sharing ideas. अभी जो learning to learn है, मुझे लगता है कि जो सपना आपने देखा है, उस सपने को हम लोग मिल के जो है साकार करेंगे. Thank you so much. Not that kind of a business. It's open now. Yeah. Thank you. All right. Thanks, everyone.
On behalf of Sitare University, I would like to formally thank everyone. No need of a very long vote of thanks. I can see that all of you are very charged Sitare students, and I can see आप लोगों का कितना support है with the smiles on your face, and I believe it's a very long journey. Thank you, Pankaj ji, thank you, Pooja ji, thank you, Amit, thank you, Shilpa there. Thank you, everyone, for being here, and have a great evening. Thank you. Sorry. Yeah, okay. Can I request Pooja ji to come and say a few words, please? Actually, I couldn't hold myself after such an enriching lecture by Mr. Vishal, and the immense amount of effort and coordination that has gone into making it happen. दो बातें मेरे मन में आई अभी बैठे बैठे, और दोनों बातें मैं बोलती हूँ. पहली चीज़ जो बार बार पंकज ने और अमित जी ने बोली कि एल्केमिस्ट का रेफरेंस लिया और वो ब्रह्मांड लग जाता है, कायनात आ जाती है सारी साथ में. तो मुझे लगता है बच्चों की भाषा में अगर बोलें तो ओम शांति ओम सबने देखी होगी, शाहरुख खान को भी सबने सुना होगा. तो किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको तुम्हारा पूरा करने में. शायद ये बात आपके दिमाग में ज़्यादा रुकेगी. तो शिद्दत से चाहो कोई चीज़ को और वो कायनात लग जाएगी उस चीज़ को पूरा करने में, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अमित जी के साथ मैं सुनती रहती हूँ पंकज, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं. टुडे इज़ द फर्स्ट टाइम. It's a lovely moment that I'm meeting everybody here, and with lot of other people from Sitare Foundation and from different backgrounds, and with such what should I say, beautiful profiles. इतना ज़बरदस्त आप लोग का सबका अपना काम रहा है, और आप सब ने यूथ के लिए जिस तरह की मिसाल कायम करी है अपने काम से और अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, वो चीज़ कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. मतलब मैं इतने साल से काम कर रही हूँ और आज मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही है. मुझे लग रहा है कि काश थोड़ा समय और मिले और हम कुछ और कर पाएँ अपने जीवन में, कुछ और नया कर पाएँ. सो आई एम फीलिंग डबली ट्रिपली एक्साइटेड अबाउट डूइंग समथिंग new and creating some new opportunities. I'm sure that this energy is getting transferred to the youth. But more than that, and I think most important thing that I felt today, and I'm very honest about it, is मैं कबीर साहब को पढ़ती हूँ और उनकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही थी यहाँ पर, जो मुझे लगता है सितारे फाउंडेशन के ऊपर बिल्कुल अप्रोप्रिएटली उसको हम कह सकते हैं उसकी थॉट्स के लिए, जितना मैं समझ पाई आज की बात से. तो कुछ इस प्रकार है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर. आज इतने बड़े बड़े लोग हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन उस खजूर के पेड़ का क्या इस्तेमाल जो ना तो पंथी को छाया देता है और ना ही उसके फल तक हम पहुंच सकते हैं. तो आपने जितने भी बड़े काम करे हैं, आपने उस झुके हुए पेड़ की तरह से अपने आप को दिखाया है कि आपकी छाया भी इन बच्चों को मिल रही है, और आप जिस तरह से काम में लगे हुए हैं वो फल भी इन बच्चों को मिल रहा है. तो आपके बड़े होने का आज सफल एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं. बहुत लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन अगर आप समाज को नहीं दे पा रहे हैं और अपने साथ और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो सब करा हुआ बेकार है. मैं ये जानती हूँ कि आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जो भी आपने अपने जीवन में बड़ा किया है, उस सब से हम सबको छाया भी मिल रही है और हम सबको उसका फल भी मिल रहा है. तो आप सबको मेरी ओर से शत 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 नमन. एक आखिरी बात जो कि कोइंसिडेंस में कहूँगी, हम लोग का यूनिवर्सिटी का कुल गीत है, और उस कुल गीत की दूसरी लाइन, पहली लाइन है नमो नमः इस विद्या कुंज को, नमो नमः नवल तारक पुंज को. ये लिखा मैंने ही है इसलिए मैं बोल पा रही हूँ यहाँ पर. नमो नमः निज विद्या कुंज को, ये विद्या का कुंज है, ये जगह है, ये मंदिर है विद्या का. और दूसरी लाइन कहती है नमो नमः नवल तारक पुंज को. तारक होते हैं तारे और पुंज होता है ग्रुप. तो सितारे फाउंडेशन के ये जो तारे आज हमारे इस ग्रुप में जुड़ गए हैं, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सौभाग्य और कोइंसिडेंस, और जो बात आपने कही कि ब्रह्मांड, ऐसा लग रहा है सच में ब्रह्मांड आज मिल गया है हमें मिलाने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.